Screen visible अभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so again, there is very important topics we have to cover today, related with the film appreciation and analysis. ठीक है? In today's session, we will going to cover lots of very important questions related with the film grammar. It's belong from Unit 4, right? So you guys have to be very careful about these PPTs. All the e-contents uploaded on iCloud, so you just download the all e-content and go through a daily basis. Just check it out all the content because the all questions comes in a ET from the unit 1 to unit 5 from all these PPTs which I shared or will be shared in upcoming sessions. So very much important PPTs is this. Let's go through with the PPTs. Okay, so in this PPT, we will cover a few important topics like mise en scene, 180-degree rule, full effects, fiction and non-fiction film, and costume design, right? So this is very important topics we have to cover in it, right? So what exactly mise en scene? So uh, mise en scene, it's a French word. It comes from the films. कि वहाँ हम उसके लिए क्या चीज़ें अरेंज करते हैं. It's a French word. Mise en scene is the arrangement of scenery and stage properties in a play. Right. So it comes when most probably all the acting part is related with the theaters or plays. Right. So live plays they use, and in a French word they use mise en scene. So it's related with the all the stage properties. It means the content product related with the background, the curtains, the designs, the poles, the props, everything which is related with the stage scene, right? Translated from French, it means setting the stage, right? So it means mise en scene. It means related with the setting the stage for the play और थिएटर. जब हम अपने लाइव प्लेस देखे होंगे ना तो वहाँ पे हम चीजें अरेंज करते हैं, चीजों को प्लान अप करते हैं. प्लान किया जाता है कि किस एंगल से कैरेक्टर आएगा, कहाँ से वो खड़ा होकर स्पीच देगा, कहाँ वो अपना डायलॉग बोलेगा, उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स is related with mise en scene, right? So the term mise en scene refers to everything in front of the camera. It means the eyes of the pupil or the persons who is watching the play or who is sitting in front of the row. They can see the characters or the stage. So वहाँ उन्हें जितनी भी चीजें दिख रही होंगी वो सारी चीजें स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर आती हैं. और यहाँ हम कैमरे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम फिल्म के लिए बात करते हैं तो वहाँ व्यूअर्स की आईज कन्वर्ट हो जाती हैं कैमरे में. ठीक है. सो from the eyes of camera we can see the movies when we see the films in the theater or anywhere else on a screen. So we can see through the camera, right? कैमरे ने जो कैप्चर किया हम वो देखते हैं, right? So we need to understand that what should be appeared in the front of camera. It comes in a good manner or in a appropriate composition, right? So here everything in front of the camera including the set design. जो भी कैमरे के सामने आता है उसके अंदर सेट हो गया. It comes in a set design, lighting and the actors. कहाँ प्लेस होंगे, कहाँ खड़े होंगे, उसके ऊपर लाइट कहाँ से आ रहा होगा. mise en scene in the film is the overall effect of how it all comes together for the audience, right? It means mise en scene, it means related with the all the important elements of the filmmaking, like the character composition, like the background, like the lighting, everything which we can see through the camera. It comes in a mise en scene. All the compositions we can say, right? So क्या क्या चीजें आ जाती है mise en scene? Elements includes few elements. You guys are very much aware about the elements. Element, it means without elements we cannot compare or we cannot complete all these things, right? So set is the most important thing. All the films have good set or designs, right? Anishu, you getting any problem to join? Don't leave the session again and again. It's very much complicated for me to understand that. Set, it means everything where the character comes and deliver all the dialogues and give all the action scenes and the backgrounds. So for the background we call say sets. So sets बहुत सारे हैंडमेड सेट्स भी होते हैं जिनको हम आपने फिल्म सिटीज में जाके कभी विजिट किया होगा इन हैदराबाद. आई थिंक लक्ष्मण बिलोंग्स फ्रॉम हैदराबाद. एम आई राइट लक्ष्मण? Yes, sir. एंड देयर इज अ वेरी पॉपुलर फिल्म सिटी. व्हाट्स द नाम? नाम क्या है उसका?
Ramoji Film City. Yeah, so there is a very popular film city, Ramoji Film City. It's just a tourist place also right now, and there is a lots of sets is already built up, and you guys can visit. You can check it out the different scenes. And in Mumbai, there is lots of film cities, so you can find out the look. There is the set is already developed and designed by the different artists. वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है आर्टिस्ट का, जैसे कि मूर्ति वाले आर्टिस्ट हो गए, जैसे कि पेंटर्स हो गए, ठीक है, क्राफ्ट वाले लोग हो गए, the combination of the artists they use, they design sets very appropriately. वहाँ पे आप बहुत अमेजिंग अमेजिंग फिल्म्स के सेट्स देख सकते हो, बड़े बड़े ह्यूज सेट्स होते हैं, ठीक है। सो जनरली आप जब विजिट करोगे तो वो आपको दिखाते हैं अलग अलग सेट्स पे कि किस मूवी की शूट किस सेट के लिए हुआ है। तो you can find out the temples, railway stations, and you can find out the hilly area, you can find out the forest, you can find out the street, the highways, everything is built up through the craft and through the dramatic scenes. And next one is props. Props again a different part. We create props sometimes, artificial props we create, and we are just creating for the illusions, right? Props like सपोज आपने मूवी में देखा होगा कि कैरेक्टर को हमने ना टेबल के ऊपर देखा, हीरो ने किसी विलन को उठा के टेबल के ऊपर फेंका और टेबल टूट गई, राइट? सो इफ वी यूज द रियलिस्टिक प्रॉप्स और ऑब्जेक्ट्स, so it's not possible. So as a creative designer or artist or a good sculpture artist, they created these kind of props with the help of scrap material. They use thermacols, they use color combinations, different poster colors, and they use different material to creating the these kind of props. Lighting, it means lighting. Suppose we are in front of the artificial sets and we want to create an environment of a evening, right? So light plays a very important role. Suppose the protagonist of the film is sitting in a garden and in an evening at 8 o'clock, right? So we need to put lights and we need to understand about the importance of light. So how moon lights comes on the face of the protagonist, and suppose there would be a light poles, so how it reflects on his face and where with the shadows goes. So all the things related with the lighting, and it created through realistic light. Sometimes we use on for the film or 3D animation film, we put lights through Maya or Max. There is a chapter for lighting, okay, separate chapters, and then the specialization on lighting also, because light is very important. Without light we cannot understand, we cannot justify the timing, we cannot justify the environment, we cannot justify the mood of the film, we cannot justify the mood of the timing of the movies or sometimes the situations, right? So lighting plays very important role. Again, the costumes. If we talk about the costumes, तो अगेन कॉस्ट्यूम्स के बारे में हम बात करें, कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कॉस्ट्यूम से हम लोगों को जज कर लेते हैं कि वो क्या होगा, राइट? सपोज अ कैरेक्टर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज वियरिंग फॉर्मल शर्ट विद अ टाई एंड फॉर्मल लेदर शूज, सो हाउ ही वुड बी, क्या होगा वो, व्हाट ही वुड बी, व्हाट हिज प्रोफेशन इज? एनी सजेशन? A person comes in front of you with a formal shirt with a tie and he is wearing a leather shoe. So what would be his profession? A lawyer? He's not wearing a black coat. But any profession we can easily connect it. And even think like that, he's a kind of, we can say, thief, or he is playing a role of a villain or antagonist character. We cannot imagine, because when the appearance come with the costume, so we cannot understand that what exactly he is, but with the costume we can easily justify our thoughts कि okay यार ये इसका costume है, okay ये इस तरीके का character लग रहा है. Suppose we are watching a character like he is wearing a dhoti and kurta and he is taking a stick, so we cannot understand that who he is actually. So we easily understand, we can justify that he is belong from the rural area, he is a kind of farmer or anything else, he belongs from the rural areas, right, or villages. तो कॉस्ट्यूम्स आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है और कई बार आपकी आइडेंटिटी भी बता देता है कि आप कौन हो गए, बाय प्रोफेशन आप क्या हो गए, ठीक है? एक्टर ब्लॉकिंग, शॉर्ट कंपोजिशंस, ऑल दीज थिंग्स. एक्टर ब्लॉकिंग इट मींस वेयर द एक्टर कम्स अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेज इन और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और उसका स्पेस क्या होगा, कहाँ पे वो खड़ा होकर अपना डायलॉग डिलीवर करेगा, कहाँ वो एक्शन सीन करेगा. तो दिस इज कॉल्ड द एक्टर ब्लॉकिंग. इट मींस
उस एरियाज को हम फिक्स कर देते हैं कि एक्टर को वहां से मूव करना है, 4 स्टेप्स मूव करेगा, स्टेज पे आएगा, 4 स्टेप्स को ही शुड बी स्टॉप एंड ही हैज टू deliver his dialogue, right? So there would be the specific areas for antagonist, protagonist, where it comes, where the fighting scenes begin, what would be the background should be like. So everything is planned, everything is fixed. So all this information comes in a mise en scene. So that's the part of assistant director or creative director. They both do this thing, and the director just identify all the information, it's done or not, right? So there is an reference Oscar Award winner movie, Parasite. Blocking, staging, costume, and shot composition always tells us its theme. A theme, class difference between two lives, two families. So there is a reference file also. You guys have to understand that what exactly the importance of set, props, lighting, costume, anchor, all these things you can find out in this film. So there is a class difference between two lives, two families. You can see a film also, and then you can find out the difference. Okay, what exactly mise en scene? So I hope it's not very much it's not too much complicated. It's easy. Now the other thing, how we can take shots. So with the help of 180-degree rule, we can identify this कि जब भी हम कैमरे के साथ प्लानिंग करते हैं, जैसे हम स्टेज पे हैं तो स्टेज को किस तरीके से आप कैमरे के साथ कनेक्ट करके रखते हो. सो देयर इज अ इंपॉर्टेंट रूल इज कॉल्ड 180-degree rule, जहाँ कैमरा मूव करता है. सो देयर इज अ डायग्राम ऑल्सो. Okay, so you can understand through the diagrams कि कैमरा किस तरीके से मूव करना चाहिए. So the 180-degree rule is a cinematography rule concerning the space between two actors within a frame. When we find out two actors sitting in the restaurant, or they want to discuss something, they are standing in front of and they want to discuss, they want to take fight or some actions going to place. So we need to understand where should we have to place the camera, right? So imagine an invisible line or axis passes through the two actors. So as an director or cameraman or film grammar knowledge, we need to understand about the hidden line we have to plan, right? Hidden line, it means invisible line we can say. So वो उस line को हम cross नहीं करते, right? Camera उसको cross नहीं करेगा. Under the 180-degree rule, the camera can move anywhere on its side, but it should not pass over the axis. ठीक है? So it should not be go on the beyond this hidden line, right? Keeping the camera on one side of the 180-degree line makes sure the actors keep the same left-right relationship with with one another. Scene filmed the way look already orderly and can be easily followed. So suppose the two persons is sitting, right, and the camera is here. He was taking the shot over the shoulder shot, and he was capturing the expression of this particular character, right? And then his dialogue is over, and we want to capture his expression, right? So this camera can take his expression, right? But if I switch the camera movement and I placed it here, so the combination looks wrong. We cannot identify the person. ये अभी राइट में था, वो लेफ्ट में शिफ्ट स्विच हो जाएगा, राइट? सो लाइन ऑफ विजन इट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ विजन, जिसको हम क्रॉस नहीं करते. तो तीन कैमरे होंगे, जो मिड शॉट यहाँ से ले रहा है, दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है. वी कैन शो द सिचुएशन इन द पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस कैमरा, एंड वी कैन capture the expression of both of them through these cameras. But we cannot move the camera, we cannot switch the camera from these line. ठीक है? This line we cannot cross. This is called the 180-degree. We can use this rule. Is it okay? कितने लोगों को पता है? In a film grammar, this is very important thing. ठीक है? So this is called 180-degree rule, and you guys has to understand about this. Camera should, the placement of the camera, and this will help you to understand about the set design, and it will help you to understand where we have to place the camera on the stage, right? So if you are planning to take a shot of a news reader or two persons who is sitting in a restaurant, they are talking with each other. So we need to understand about this invisible line. This is called the line of vision, and we have to plan the camera according to the set. So यहाँ अगर suppose आपका set है ये पूरा, तो आपको यहाँ कैमरे प्लेस करना होते हैं, ठीक है? आप कैमरे को कभी भी मूव करते हुए इसकी तरफ लेके नहीं जाओगे शॉट लेने के लिए. So that's the important thing. In 180-degree we have to understand. So you guys has to be very careful about this important topic, 180-degree rule. This is a rule for camera persons. Okay. Now the Foley sound. Sound is very important.
everyone knows about the sound. There is a different kind of sound we can find out in a film or any kind of stage shows. Sound plays very important role. So in a Foley effect, Foley sound effects are those made in recording studio called a Foley stage. While watching the picture, a Foley artist performs the acting more or less synchronously with the picture. The perfect example of Foley effects are footsteps, who are always made with this sound effect. So sound effects, it means Foley बोलते हैं the Foley sound effects are the most responsible for realistic impression of the movies. However, they often exaggerate the real life sounds to make them audible. Foley recording was invented early in the history of film sound by a man named Jack Foley. Right, so it means the Foley effect is introduced by Jack Foley. So again, this is again an important question. So you need to understand about the importance of Foley sound. So it introduced by Jack Foley first of all, and what we do in a Foley. आप लोगों ने कभी नाम सुना है इसका basics? You guys has to hear about this Foley sound. Yes, sir. So can you elaborate little bit? सर जैसे मूवी में जो सीन होते हैं तो सारी जो आवाज होती है वो ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते माइक से, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में उन सारी आवाजों को दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है जिससे मूवी में वो इफेक्ट आ जाए. एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो जैसे कि साउंड्स के बारे में बात करें, सो यहाँ कुछ एग्जांपल आपको दिए. सो दे क्रिएट साउंड विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रैप मटेरियल दे यूज फॉर दैट, एंड यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट द वीडियोज. इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव वीडियो. इट्स अ Foley sound artist, so you can find out on YouTube. It's on YouTube. So they use the lots of scrap work. So some example is here in the PPT. Coconuts of walking horse. It means when we want to create a sound of walking horse, so we use two coconut shells and we just creating the effect of sound, right, of a walking horse. Got it? Beacon for rain, celery, breaking bones, staple guns, gunshots, bamboo, arrows, newspaper, grass, aluminium, thunder, a phone book or slab of meat, punching, right? Phone book दिखाने के लिए so we use a punching of slab of meat. तो इन सारे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आपके एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो वो यूज करते हैं. सो इट्स नॉट मैंडेटरी you have to create the sound with only these few tools. There was lots of tool and you can find out on YouTube. So the Foley artist is just like a scrap dealers kind of thing, and you find out lots of scrap material and they are just playing the movie, right, and they just recording the sound with the help of some scrap tools. So creating sound, it's very creative part. It's a totally creation and it's a totally creative part. I found it. It's naturally it's very creative. Just find out the video and you can understand about the importance of Foley artists. And they plays a very important role to creating a dramatical sound. Dramatical sound, it means suppose you have to find out the video. There would be a two car clashes in an accident. So the sound comes. वो कैसा sound होगा जो होगा. So they created this sound. And I found a video on YouTube. So they created the sound of snake is running on a grass. So this is a very complicated sound. It comes and they want to create it because it's not possible to capture through the camera or through the audio devices. So they created this sound with the help of few kind of they use one is a rope kind of thing, and they use it on a newspaper. So when it running through on a newspaper, they recorded the sound and it sound very realistic. It comes, right? So there's a lots of creative content. They use it. Just check it out. और ये आजकल बड़ा demanding है. It's a very demanding profession. There is very few artists जो इस तरीके का काम करते हैं एंड दे आर इन वेरी मच डिमांड, क्योंकि हर फिल्म के अंदर आपको साउंड इफेक्ट्स डालने होते हैं, हर फिल्म के अंदर आपको ऑडियो को क्रिएटिवली क्रिएट करना होता है. ठीक है, सो इसको आप एक बार वीडियो जरूर देखोगे तो इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ फिक्शन और नॉन फिक्शन फिल्म फॉर्मेट्स. सो इन जनरल फिक्शन refers to plot, right, setting and characters created from the imagination. It means we are talking about the fictional world. So fiction topic कैसे हो सकता है, फिल्म नॉयर से रिलेटेड हो सकता है, फिल्म जनरल से रिलेटेड हो सकता है. फिक्शन और नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं? While नॉन फिक्शन
refers to factual stories focused on actual events and people. So fiction, it means we are going to create a movie like Endgame, so it's a fictional movie. We are watching a movie like Avatar, it's a fictional movie, right? You are watching a film basis on a unrealistic story like Spider-Man or any kind of superheroes we are watching for that. So it's just a fictional story we have. And non-fictional story, when we found the realistic events like in Uri, we can see there's a lots of films like Padmavat. It's a biographical. It's not fictional. We can say it's a fictional, or sometimes we can say that's historical because it's a documented movie. So we need to understand about these important lines about the fiction and non-fiction film formats, right? So fiction and non-fiction, fiction it comes with imagination, and non-fiction comes with the realistic or factual facts, events and pupils. So it all depends. कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ उसके बारे में हमने फिल्म बनाया, वी कैन ऐड सम क्रिएशन एंड क्रिएटिव लाइंस इनसाइड इट, वी कैन फिक्स इट, और कुछ हम फिक्शनल यूज कर सकते हैं लेकिन वो रियलिस्टिक इवेंट से कनेक्ट होगा, ठीक है. Fiction is not true and non-fiction is true. There is the comparison, right? So if in your exam you found this question about the fiction and non-fiction film format, so you can put inside your you can say thoughts or values, you can use your observation also. So what exactly fiction for you and what exactly non-fiction for you? So first important line is that fiction is purely imaginated, ठीक है, imagination world we can fix in a fiction, and non-fiction it means it comes from the actual events and people, right? While non-fiction focuses on ideas or events that actually took place, it means non-fiction, right? Fiction tends to be focusing on imaginary ideas and events. In fiction we have to create all these things like background, like foreground and the events. We need to create everything with the imagination. Fictions are made up stories and non-fictions are entirely fact-based writings, right? So suppose a story writer is writing a good story, so he need to understand about the concept. It's a fictional concept, so he need to write a just you can understand about the Harry Potter. If you've seen the Harry Potter series, so it's a fully fictional series. So story writers has to write a story and it makes in a sequence, right? In a non-fiction story, we have an already a story is already based, so we need to create some events or we can fix some plots to creating a movie, right? Suppose जैसे कि आपने देखी होगी बायोग्राफी, अगर हम बात करें तो MS धोनी देखी होगी, सचिन तेंदुलकर का देखा होगा, ठीक है. सो वी कैन फाइंड आउट द बायोग्राफीज, वहाँ हम फिक्शनल इवेंट्स को कुछ प्लॉट करते हैं, ठीक है. सपोज हर किसी की लाइफ को इस तरीके से हम सीक्वेंस में नहीं डाल सकते, तो एक एज एन गुड और क्रिएटिव राइटर हमारा काम क्या होता है, उसको सही तरीके से प्लॉट्स के साथ अटेंड करना. जैसे कि पहला जैसे हमारा वी शेयर ऑलरेडी हाउ टू प्लान प्लॉट्स. मैंने आप लोगों को एक स्टोरी ट्रायंगल आपको शेयर किया था. It begins with the exposition, then rising action, then climax, then falling action, and the resolution. Remember? कितने लोगों को याद है? Yes, sir. याद है ना? So this is called the plot. It's the part of story writing and the part of plot elements. कि किस तरीके से प्लान अप करते हो स्टोरी को. So process सबका सेम होगा. अगर हम फिक्शनल स्टोरी भी लिख रहे हैं तब भी उस डायग्राम को फॉलो करेंगे, और हम नॉन फिक्शनल स्टोरी की बात कर रहे हैं तब भी हम उस डायग्राम को फॉलो करेंगे. लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी एंड वी हैव टू जस्ट पुट इन द सीक्वेंस कि हम कहाँ से स्टार्ट करें फिल्म को और कहाँ जाके एंड कर दें, ठीक है. हम किसी की पूरी लाइफ नहीं दिखा सकते. एवरी इवेंट वी नीड टू, इट्स नॉट मैंडेटरी टू कम फिक्स इन अ मूवी. Fictions are just entertainers and on the other hand non-fictions are informative. ये एक अच्छा पॉइंट है. You can notice this point. Fictions are just entertainers, but it not always an entertainer. Sometimes we use fiction stories, fictional stories, and with the good message also. So it's not like this. Fictions are just an entertainer. It's not just an entertainer. It would be beyond that, right? On the other hand, non-fictions are informative. We know about that information. It comes from the non-fictional story because we find out stories here everywhere, but it's not like this. Fictions are just entertainer. I am not agree with that. अगर आपको लगता है so you can put your inputs. आपको अगर अपना लगता है कि आपको लगता है कि entertainer ही होता है so you can put your input. अगर आपको change करना है you can change the answer, right? But it's truly based on fiction or non-fiction format. Any doubt
आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे नो में सर। आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जांपल है कि वो एंटरटेनर नहीं हो सकते, यू कैन राइट योर आंसर आल्सो, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, राइट। नाउ इट्स पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन, इट्स रिलेटेड विद द माइज एंड सीन, द पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम, राइट। सो ये सारा ना माइज एंड सीन से रिलेटेड था, जिसमें सारी चीजें आती हैं, क्योंकि हम जब थिएटर में स्टेज के सामने खड़े होते हैं, सो वी नीड टू प्लान अ कैमरा, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइन ऑफ विजन, foley sound, because the sound is already coming from the background, and sometime we use in a post production also, as Akash told us, right? Fiction and non-fiction, it means the file format or the storyline, कहाँ से वो आया है, concept कहाँ से आया है. And according to the fiction or non-fiction story, we need to design costumes. Costume communicate the details of a character's personality to the audience and help actors transform into new and believable people on screen. Right. So this is very important. With the help of costume, we can understand what exactly the character is and what would be his profession. Most important line: the audience must believe that every person in a story has a life before the movie begins. Okay. सो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट्यूम वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो उसकी लाइफ मूवी में जहाँ से दिखाना शुरू किया उसके पहले उसकी लाइफ कैसी रही होगी, उसके कॉस्ट्यूम से हम समझ सकते हैं. सो इनका मतलब यहाँ बताने का ये है कि अगर हम फिल्म देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म हमेशा एक कैरेक्टर बचपन से ही शुरू किया जाए, फिर वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है. नॉट लाइक दैट. विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट्यूम वी कैन ईजिली कम्युनिकेट दिस, राइट. जस्ट एज द एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग वर्क together to create a harmonious image, costumes must work within the composition of a scene. So अगर आप composition की बात करो तो मतलब कि अगर कैरेक्टर को आपने दिखाया कि फिल्म इज गोइंग टू बिगिन एंड द कैरेक्टर इज स्लीपिंग, सो व्हाट वुड बी हिज कॉस्ट्यूम. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट सो के उठा है, ठीक है, जो आपका हीरो है फिल्म में, दिस इज योर फर्स्ट शॉट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट्यूम कि वो बता देगा कि वो अगर वो कमरे में से बाहर निकल के आ रहा है और वो सो रहा था, सो वी कैन सी द कॉस्ट्यूम एंड वी कैन फाइंड आउट कि ओके ये अभी सो के उठ के आ रहा है, राइट. सो गॉट इन माय पॉइंट. सो इस तरीके से हम कॉस्ट्यूम और कंपोजिशन प्लान कर सकते हैं. एवरीथिंग इज इन द फ्रेम इज डिजाइन टू हेल्प टेल द स्टोरी, इंक्लूडिंग द पीपल, सेट ड्रेसिंग्स, वॉल कलर, फर्नीचर एंड द कारपेट्स, प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स. सारी चीजें की कंपोजिशन को हेल्प करती हैं कि आपको किस तरीके का कॉस्ट्यूम होगे, घर में होगा, बाहर होगा, स्कूल जा रहा होगा, स्कूल से आ रहा होगा, यंग है, ओल्ड है, एवरीथिंग, प्रोटैगनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, सबके लिए ना कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को काम करना पड़ता है. And they need to understand about the color theories also, so which kind of color combination they have to use for the costume and for the props, right? Which kind of dressing sense, which kind of hairstyle, shoes, everything we need to understand first. And the part of the costume designer, it begins when the script is done, right? जैसे ही स्क्रिप्ट खत्म होता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम शुरू हो जाता है कि ही कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मेनी कैरेक्टर कम्स इन द मूवी एंड विच काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स दे बिलोंग, विच काइंड ऑफ expression, which kind of role they have to play. So we can find out everything, which kind of character they have. So the costume designers work begin when the script is done. Color is one of the most important tools that the director uses to create the mood of the movie, right? So color, आप देखते होगे बॉलीवुड फिल्म में बहुत सारे मल्टी कलर्स दिखाते हैं, क्योंकि इन अ बॉलीवुड फिल्म देयर इज अ रोमांस, देयर इज एक्शन, देयर इज सैड सीन्स. So there is a multicolor movies we can find out in a Bollywood. But if we think about the Hollywood style film, so if the Hollywood film is an action film, so we found out from the beginning to the end, we find out lots of action scenes, right? So वहाँ color combination बड़े limited होते हैं. You can find out the limited color palette, right? But instead of we are thinking about the Bollywood films, or we can find out the Tollywood films, so we can find the different multicolors they use for the costumes, backgrounds, props. आप यहाँ तक कि अगर हम एक्सटीरियर की भी बात करें तब भी हम कलरफुल बैकग्राउंड्स देखते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन ग्रास, ब्लू स्काई, बहुत सारी ऐसी इंटरेक्टिव और कलरफुल चीज़ें मिलती हैं, राइट. कॉस्ट्यूम कैन चेंज द शेप ऑफ एन एक्टर्स बॉडी टू रिफ्लेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द स्टोरी एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर. सो टाइम पीरियड की बात करें, अगर आप मूवीज देख रहे हो कोई, जो जैसे आप अभी 83 मूवी आया, यू गाइज हैड वॉच्ड दिस मूवी 83. So the hairstyle, the costumes, the props they are using, all that's related with the time period of 83. So with the help of costume, with the help of hairstyle, with the help of look of the character, we can identify okay कि ये contemporary world नहीं है, it's some past movie, right? कि वो हो चुका है already सारा कुछ. For Man of Steel 2013, costume designer Michael Wilkinson created the Superman costume to be worn
over a muscle suit, right? So ये example है कुछ costume tells characters demographic and psychographic roots. It helps to know the caste, the religion, gender, class, region, origin of the character. So I think it's a sufficient information about regarding the importance of costume design in a film. So you can put your inputs also again in this topic also कि आपको अपने ideas भी आप इसमें डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है कॉस्ट्यूम से, क्योंकि ये कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं हो सकता इसको लेके कि जो मेरा एक अपना ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन, बिकॉज कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अगर स्कूल या कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरे पास मेरा कॉस्ट्यूम किस तरीके के होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक ऑफिस में मैनेजर हूँ तो विच काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम आई हैव टू वियर। अगर मैं घूमने के लिए कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर द वेकेशन एंड आई एम गोइंग फॉर द हिल एरिया, सो माई कॉस्ट्यूम्स इज सपोर्टिंग दिस एनवायरनमेंट कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं वो बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ कि मैं पहाड़ पे हूँ या स्नोई बैकग्राउंड है, तो वहाँ मेरे कॉस्ट्यूम किस तरीके के होंगे, ठीक है, मेरा स्टाइल क्या होगा, ड्रेसिंग सेंस क्या होगा। सो कॉस्ट्यूम्स आपके बैकग्राउंड और आपकी कंडीशंस और आपकी अपब्रिंगिंग उन सारी चीज़ों को ही बता देते हैं। सो अगर आप यहाँ देखोगे ना तो इन्होंने सारी चीज़ें लिखा है। इट हेल्प्स टू नो द कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, क्लास, रीजन, origin and the of the character. So all this information we can easily identify through the costumes, right? So as a costume designer आपका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझना, चीज़ों को समझाना और कन्वे करना, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट्यूम से कन्वे की जा सकती हैं एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, ठीक है। सो अभी जो हम पार्ट सारा आज हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा प्रैक्टिकली किस तरीके से एक स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस आर्टिस्ट और किस किस रूल्स की जरूरत पड़ती है, एंड इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ फिल्म ग्रामर। इन अ नेक्स्ट PPT I will share few important topics, right, again. So just check it out, this PPT I'm going to upload it on iCloud and going to mark your attendance, so be ready for the attendance. And I think you guys has to just upload your assignments. Next assignment create करना है मुझे।